सर, जैसा कि हम जानते हैं, समुद्र एक बहुत ही विशालकाय चीज है। हाँ और उसकी कई डरावनी वीडियोस भी हम देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ ही साथ में हमने देखे कि कितने बड़े बड़े जहाज होते हैं और पानी में किस तरीके से वो तैरते हैं। हाँ सही बात। आज जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं, वहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े जहाज समुद्र में हैं और उस टाइम समुद्र में भयंकर तूफान भी आ रहा है। अरे बाप रे, क्या बात, भयंकर मंजर, भयंकर तूफान। तो सर, आप इस वीडियो को देखें, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दें। साहब वो तो समुद्र है साहब, बड़ी बड़ी कश्ती हो कि बड़े बड़े जहाज हो, वो तो समुद्र ही है साहब। वो कब किसने में कैसे विक्रम को कोई कहीं नहीं, वो तो जब उसको गुस्सा आता है तो वो ये नहीं देखता कि ये जहाज है कि कश्ती, उसका काम है फेंकना और वो फेंक देता है। From a massive fishing trawler tossed around like a toy, to a merchant navy ship caught in a force 10 storm, and a chemical tanker headed straight for an unbelievably large swell, here are 10 ships caught in monster waves. बताओ भैया। The North Sea is the 220,000 square mile body of water between Great Britain, the Netherlands, and Norway. It's been the center of geopolitical affairs since the rise of the Vikings, and rulers from every northern European country have sought control at one point or another. The North Sea also serves as Europe's primary fishery, with over 5% of all international fish caught in its waters. The fishing boats are built to withstand some monstrous waves, but sometimes the water gets a little too rough for comfort. In February of 2011, one crew learned how mighty the North Sea can be. 2011 की बात है भैया। बाप रे बाप। और इसके लिए आखिरी दिन हो सकता है भैया। जितने से कैसे झकोले मार लिया यार, दुबार है ये, वो तो वो सही गए, वो जो बर्दाश्त कर रहा है। मैं तो दम तोड़ दूं भैया यार, ये जगह कैसे झकोले यार, बाप रे बाप। अच्छा, ऐसे में ही है दूसरी नाव वाला उसकी मदद नहीं कर सकता क्या? सही है, इसी तो जगह डूब जाए है नहीं तो क्या? सही, मदद करने के चक्कर में। We're looking at a fishing vessel named Lapwing PD972, a 78-foot boat sailing under the UK flag. But the Lapwing looks more like a toy in a bathtub as the massive waves move it up and down. समंदर में तो At माचिस one की डब्बी point, लग रही है the nose of the यार। ship pokes almost 45 degrees out of the water. Imagine trying to keep your footing on that thing. Right now, oil makes the world go round. But all that oil has to get from point A to point B somehow. And the best means of transportation are massive tankers traveling around the world. These ships are built to withstand the worst conditions Mother Nature has to offer to protect their assets. But in December of 2011, one of them nearly capsized when it encountered the full force of the लो भाई, ये भी ocean. 2011 की बात है। बाप रे बाप, क्या कोई तो भाई ये तो भगवान ही चलाता है इतने बड़े जहाजों को, तो किसी में दम नहीं है कि जो इतना बड़ा जहाज में बैठ जाओ। तेरी भी तो तेरी जाता है जहाज। The Sikkim Padua, an oil tanker sailing off the coast of South Korea, gets caught in a string of tsunami-like waves. The worst place to get hit with a big wave सुनामी is जैसे from ले the रहे sun. हैं। So, the entire crew probably held their breath when one of those monsters approached off the starboard flank. The wave tips the vessel to a बहुत खतरनाक मंजर है भैया। nearly capsizing it. Thankfully, she rides up and over the wave and 40 डिग्री crashes तक down झुका on the दिया था other बाबू side. भाई। As of April of 2020, there were 810 very large crude carriers, or VLCCs. They carried about 1.86 billion metric tons of crude oil back and forth. And all that oil is worth a lot of money. सही बात है। Depending on the destination, it takes between 4 and 6 weeks to send a tanker from North America to Europe.
Those ships must sail across the Jesus, North sir, Atlantic किसको कहते Ocean, हैं भैया? where the waters हाँ, can get हाँ, pretty इससे ज़्यादा तो choppy लगते during हैं। severe storms. In February of 2021, a chemical tanker was making the cross-continental journey when it got caught in a bad storm for more than 3 days. Waves tossed the ship around like a log on the river, and the captain did everything he could to keep the vessel from capsizing. भयानक लहरें आ रही हैं। गया हो तो क्या? ऐसा लग रहा है कि गया ही तो। जो बेचारे इस वक्त इस जहाज में बैठे उनके क्या हाल हो रहे होंगे जब आप लोग यहाँ हाँ, बैठे अपनों को यहाँ डर लग रहा है सही। हाँ इतनी भयानक लहर है ये, कुछ खतरनाक हो- डुबाने पे आमादा हो रही है। हाँ यार दीवार उठी हुई है। हाँ, बेचारा कोई यहाँ पे फंस भी जाए तो बचा नहीं रह सकता कोई भी यार। देख किसको अपनी इतनी खतरनाक जगह है। हाँ, जो घूमने में डालेगा भैया। अरे बाप रे बाप। अरे यार क्या कर रहा है? बहुत भयानक मंजर है भैया। ओ यार The waves get bigger as the chem tanker rides up and down. Water सही even बात है। splashes up to the bridge where the crew is filming. At one point, the camera zooms in on a monster headed for the ship. The tanker rides up and down before crashing clean through another wave, bringing visibility down to zero. Thankfully, the crew and captain weathered the multi-day storm and arrived safely at their destination. Though बस ये we समझे can't भैया कि say उनका for दिन sure how अच्छा seasick था जो they इन्होंने got. पार कर लिया। Commercial fishing isn't just a handful of people with fishing rods. Vessels pull a trawl or fishing net across the ocean floor to catch as many fish as possible. As such, these vessels are called fishing trawlers. Trawling dates back to the 17th century when the British developed special ships called doggers to fish इसका in भी the बड़ा North इतिहास Sea. पुराना रहा Of है। course, the हाँ waters भैया, were इसमें about कोई as दो राय rough as नहीं। they are now, so shipmakers built vessels to withstand the harsh North Sea conditions. Technology evolved, and today we have modern fishing trawlers that can बहुत withstand जरूरी भी some है। incredibly rough water. In March of 2021, one of those ships, the Audacious, was tested off the coast of Scotland. खोलो खोलो यार बाप रे बाप। यार भयानक लहरें आ रही हैं। वो भी क्या इस हिसाब से बच्चा बनाते हैं ये कि तूफान में आए तो बचना चाहिए अपनी नाव क्या? हाँ। कोई सवाल ही नहीं भैया सबको सही। अपनी जान प्यारी। देखो नीचे ऊपर, पलट नीचे पलट ऊपर। भैया ऊपर नीचे। भाभी तुम बैठोगे नहीं इसमें? भैया मैं तो हाथ जोड़ मेरे को बैठने में मेरे को तो देखने में डर लगे तो बैठने में तो मैं मेरा हाँ। अटक गया जाए मेरे को भैया। ये अब कितना खतरनाक हो जाए बहुत भयानक है You're not यार। supposed to see the red part of the ship, so that should tell you how tall and powerful these waves really are. At times, the bow सही बात almost है। dips into the water as it falls down the side of the waves. And if going up and down wasn't bad enough, the rough waters even rock the boat from side to side. The Audacious was pretty familiar with unfriendly waves. In fact, it wrecked back in 2012 when the engine room flooded. The crew had to abandon ship via life rafts, and a helicopter quickly scooped them out of the जब water. रूम तक पानी पहुंच गया और क्या लोगे? Traveling on an open ocean comes with its own set of measurements. Nautical miles are equal to about 1.15 regular miles, and नाप तो a भाई knot जरूरी equals भी है। about 1.15 सही। miles per hour. Oh, Make sense? बाप रे। Good. These measurements are crucial when determining when it's safe and unsafe to set sail. अच्छा। It all leans on the Beaufort scale, a system that पहली बार rates the पता चला है severity हमें। of wind out on the open ocean. It ranges from 0 to 12, with 0 meaning super calm and 12 meaning hurricane force winds. On August 16th of 2021, an oil tanker in the North Sea got to see what Storm Force 12 wind feels like. गया तो रे। गया। आका वाका सब इधर तिरछा हो उड़िया, गया। इधर उड़िया, इधर उड़िया, इधर उड़िया। उब नहीं जाए यार, कितना खतरनाक हाँ सैलाब है यार, यार। खतरनाक मंजर है। यार टनों से लोहा लगा है उसके बाद भी देख लो आप कैसे ले हाँ यार। लेकिन मगर यार
वो कितनी खतरनाक लहर है। अरे खतरनाक समंदर तो बस डुबाने पे आमादा हो चुका है, ऐसा लग रहा है चारों तरफ से वो भी। हाँ यार देखो तो यार बाबू भाई यार, अगर ये पलट जाए तो क्या हो यार। बस Winds भगवान blowing ही to गिर the जाए यार, सही। भगवान ही knots मैंने as कि the ये tanker फिर भी wound तेरी up है and वो। down on the North Sea. It's certainly big enough to withstand the storm as long as it takes the waves head on. Then our सही बात है। cameraman looks out the window and sees how badly the ship rocks from side to side. Countries will issue warnings depending on the Beaufort scale. In most cases, anything above a 6, meaning समझता wind हूँ 5 speeds रुपए upwards ये of लोग 5 25 रुपए knots, हाँ। results in ये a भी मैं small समझता हूँ। vessel warning. Winds between 10 and 11 result in a storm warning, and 12 usually ends in a hurricane. In 1946, meteorologists added forces 13 through 17 to the Beaufort scale to account for tropical cyclones. Today, China is the only country that uses the extended scale. वाह यार चाइना। So, we're ready to forget 2020, right? Things couldn't have gotten worse between the pandemic, forest fires, and murder hornets. That is, until a record-setting hurricane season wanted its 15 minutes of fame. About 200 miles off the Louisiana coast in the Gulf of Mexico, an offshore supply vessel got caught in Hurricane Delta, a Category 4 hurricane with winds upward of 140 miles per hour. The ship rocked back and forth in the pitch blackness, and the only natural light came from the lightning striking all around them. ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंगल ग्रह पे आ गए हो। अरे बाप रे बाप, बिजली भी कड़क क्या रही है खतरनाक मौसम हो रहा है। यार मैं सोचते हैं वो धंका बुझ रही थी हर वक्त, जब तक जब इनकी जान का खतरा रहता है, कब किचन की वजह कोई कह नहीं सकता। ओह ये देखो जान के खतरे से। अरे बाप रे बाप। There's nothing but wind and water बाबू तो rushing बांधो past ठीक है the पर ऐसे windows on the सुनसान bridge. Thankfully, समंदर में बिजली modern गिर जाए तो क्या हो technology जाए। keeps the ship on भगवान course as फिर से Delta throws Yeah. massive सही। waves in their direction. You can hear the moment when lightning hits the boat and the alarms start going क्या off. भयानक मंजर है यार। Apparently, the strike was powerful enough to damage 2 radios and their gyro compass. The बिजली gyro गिर गई है बाबू compass भाई is इस a पे। non-magnetic ओह, compass ये that भी points कहीं true हो गया north. वो। True north and magnetic north are 2 different things, and gyro compasses have अच्छा, become integral to अच्छा। merchant ship navigation. Even though their compass broke, our hurricane sailors safely made it to shore. बहुत बढ़िया यार। When you think of a cruise, you probably picture tropical locations, poolside हाँ, ये वाला दिखा margaritas, है and भाई। all-you-can-eat buffets. But cruise ships are still susceptible to massive waves. Just ask those aboard the MV Columbus in अपन तो January समझते हैं कि of इसमें मजे करते हैं, ये भी 2020. As फंस the गया ship तूफान में से sailed लग रहा है। across the Bay of ये Biscay, लो। the body of ओह, water ये between France and बाबू। Spain, it तो लोग encountered बैठे some इसमें not यार। so तो अभी काम tropical डल weather. गया, भगवान बचाना रहे, बहुत सारे लोग रिपीटते हैं इसमें तो। ओह सबकी बोलती बन हो गई भैया, चिट्टी बिट्टी बोल हो गई सब। अरे बाप रे। अबे कहाँ गया ये, गायब ही हो गया। दिख ही नहीं रहा कुछ। अरे यार। The static camera बहुत doesn't भयानक do this तूफान है video भैया। much justice. देखने नीचे Those are जाएगा पूरा। massive समझो इधर वाले तो अंदर ही मर गए होंगे, they're ऐसा लगे sailing through, made even bigger by strong winds. यार मुझे हमने को Every डूब time गया the है। Columbus crests over a wave, it lands with a huge क्या उछाले खड़िया यार, splash, गोते sending खड़िया। ocean water and foam as high as the bridge. The MV Columbus has been bought and sold several times कहीं मछली since भी her अपने आप maiden इसमें आ voyage in जाती होगी क्या? 1988. आ The जाती होंगी। COVID-19 pandemic pretty much grounded the Columbus for good, and a Greek ship owner named Marios Iliopoulos bought her at auction for $5.3 million. He sold it for scrap ओह in इतना महंगा रहता है 2012, ये। with experts estimating its scrap value at $13.5 million. यार इतना खतरनाक मंजर है, हम देख के तो यार दिल दहल गया यार। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि जो लोग उस जगह पे है वो उन्होंने ऐसी घटना को अपनी आंखों से देखा है, तो उनके ऊपर क्या बहुत खतरनाक बीती होगी मेरे हिसाब से। बीत होगी यार। मेरे को तो ये सोच यहाँ पर देख रहे हैं तो अपन इतने डर रहे हैं, तो हाँ वो मामा
सामना करे तो उनका क्या मेरे तो यहाँ पे देखते ही सिट्टी विट्टी बोलोगे बाबू, तुम यकीन नहीं मानोगे, अंदर से धीरे एकदम ठेर सा गया कि इतना खतरनाक मंजर जमा होता तो बेहोश हो जाता हूँ। मेरे तो दहशत बैठ गई है वीडियो देखते से ही। मैं तो जाना पसंद नहीं करूँ ऐसी जगहों के, क्योंकि क्या है, क्या भरोसा नहीं आजकल यार, क्योंकि इतना खतरनाक तूफान है, ये नीचे तक जा रही है, वो नीचे से वापिस आ रही है। साहब वीडियो तो हो गई है खत्म, अब आप मेरा ये गाना सुनो, चिंगारी कोई भड़के